The topic which we are going to discuss today about goal number 7, and this is the last goal of your subject, international relations. Uh, we will discuss about the parity between North and South. North will develop country and South will develop. So let me share the screen. Then we will start our base topic. Okay. North South gap basically है क्या? मैंने जब कभी बताया कि between developing haves and have now, develop and developing. स्टार्ट करते हैं बेसिकली छोटा सा गोल है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, दो ऑब्जेक्टिव है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो थ्योरी ऑफ एक्यूमुलेशन पे, कि किस तरीके से जो कैपिटल है इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन है टुवर्ड्स नॉर्थ. और देन जो सेकंड गोल है वो इंपीरियलिज्म पे, हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, वर्ल्ड सिविलाइजेशन. This chapter deal with the basically हमारा कोई वो है नहीं, हम इसमें इसी चैप्टर को ही बेस बनाएंगे. This is the last chapter. So this chapter concerns the world's poor region, the global south, where most people live. States in these regions are called by various names. You can say third world countries, less developed countries, underdeveloped. So let's start with the objective of theory of accumulation. How do we explain the enormous gap between income level in the world industrialized region and those in the global south? किस तरीके से हम explain करेंगे? What are the implications of that gap for international policy? There are several very different approaches to these questions. We will concentrate on two contrasting theories of wealth accumulation based on more liberal and more revolutionary perspective. एक तरफ liberal और एक तरफ revolutionary perspective ज़्यादा. तो हम उसको बेस बना के हम अपने जो एक किस्म का कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन. इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन की बात कार्ल मार्क्स ने भी की थी अपनी मार्क्सिस्ट अप्रोच में. A view of the problem from the perspective of capitalism is based on liberal economy, stressing overall efficiency in maximizing economic growth. This view sees the global south as merely lagging behind in industrialized north. जो नॉर्थ में कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम करता है, और जिसकी वजह से जो साउथ है, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो बहुत पीछे रह गया. एट द एक्सपेंस ऑफ साउथ दे आर प्रोग्रेसिंग, जो कि मार्क्सिस्ट अप्रोच भी है. हैव्स और हैव्स नॉट के दरमियान जो लेबर चेंज है. अ डिफरेंट व्यू ऑफ थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलिज्म. वो क्या कहते हैं? इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एज मच एज द एब्सोल्यूट क्रिएशन ऑफ वेल्थ. क्या है बेसिकली? एब्सोल्यूट क्रिएशन ऑफ जो वेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इट सीज दैट द नॉर्थ साउथ डिवाइड एज मोर ऑफ अ जीरो सम गेम. जीरो सम और नॉन जीरो सम गेम क्या होती है? जीरो सम गेम ये होती है जिसमें दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे के से हट के खड़े हैं. ठीक है. नॉन जीरो सम गेम ये होते हैं दो सर्कल एक दूसरे के करीब आते हैं, करीब आते आते तो एक दूसरे से ज्वाइन कर जाते हैं और वो जनाब दरमियान में एक म्यूचुअल एरिया बन जाता है. यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गए, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम करना है. जीरो सम दोनों अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं. तो ये जो नॉर्थ साउथ गैप है ये भी जीरो सम गेम पे बेस करते हैं. इसमें एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाया जाता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम नहीं किया जाता. Hence, the creation of wealth in the north most often comes at the expense of the south. It also gives politics more of a role in redistributing wealth and managing the economy than does capitalism. So socialism does parallel mercantilism in some way. What is mercantilism? Mercantilism promotes the idea of concentrating wealth, power element, whereas socialism promotes the broader distribution of wealth.
जो मर्केंटाइलिज्म है वो क्या कहते हैं, वो एक्यूमुलेशन, वेल्थ की कंसंट्रेशन पे बेस करते हैं। ये इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड। सोशलिज्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बेस करते हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन कैपिटल एक्यूमुलेशन। जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्रिएशन ऑफ स्टैंडिंग वेल्थ कैपिटल सच एज बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, in order for human population and their capital to grow, they must produce an economic surplus by using capital to produce more capital. This is done by investing money in producing capital rather than using it for consumption. आप पैसे से पैसा बना रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, मजीद पैसा बना रहे हैं। The more surplus an economy produces, the more resources are available for investment above the minimum level of consumption needed to sustain human life. देखिए, एक बंदा है जिसकी इनकम है 1 लाख है, उसके खर्चे हैं 80,000, ठीक है, तो क्या करता है, वो अपने खर्चों को कम करके जनाब वो 60,000 पे ले आता है, और जो बाकी के 20,000 है वो इन्वेस्ट कर देता है मजीद पैसा बनाने में। तो इससे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होना चाहिए। आपके पास पैसे सेविंग में ज्यादा पड़े होते हैं, वो जो सेविंग वाले पैसे होते हैं वो आप दिन दिन आगे मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। In the industrial revolution of several centuries ago, greatly accelerated the process of world accumulation, drawing on large amount of energy from fossil fuel. But industrialization has occurred very unevenly across the world region. The North has accumulated vast capital, and though the South produces spurts of wealth and has pockets of accumulation, in most areas it remains a pre-industrial economy. The reason why the North consumes nearly 10 times as much commercial energy as per person as the South. तो वो कहते हैं कि इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो गैप है ना, वो नॉर्मली जो प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी ही कंसीडर की जाती है, जो कि साउथ, बेसिकली गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वर्ल्ड सिस्टम है वो कहते हैं दो पे बेस करते हैं, कोर है, पेरिफेरी वर्ल्ड सिस्टम है। कोर कौन से हैं, जो कि नॉर्थ है, पेरिफेरी कौन से हैं, जो कि साउथ है, और एक टर्म यूज की जाती है सेमी पेरिफेरल। सेमी पेरिफेरल कौन से है, जो कि कोर से एक पहली स्टेज है, जिनके साथ जो पेरिफेरल स्टेज है वो अपना लिंक एस्टेब्लिश करती है उनसे टेक्नोलॉजी अचीव हासिल करने के लिए। The global system of original class began has been seen by some IR scholars as a world system. Capitalist world economy, this view is Marxist in orientation. In industrialized society, industrialized region, mostly manufactured goods, work that uses more capital, require more skilled labor, and pay worker higher wages. The manufacturing regions are called core of the world system. The extraction region are called the periphery. जहाँ से labor आती है. The most important class struggle today in this view is that between the core and the periphery world system. The core uses its power to concentrate surplus from the periphery, as it has done for about 500 years. Conflicts among great powers, including the two world wars and the Cold War, basically result from competition among core states over the right to exploit the periphery. In world system theory, the semi-peripheral is an area in which some manufacturing occurs and some capital concentrated, but not to the extent of the most advanced area in the core. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था उतना नहीं होता। कोर से पहली स्टेज होती है ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, कॉमनली कंसीडर्ड सेमी पेरिफेरल, as are some of the newly industrialized countries such as Taiwan and Singapore as well. The semi-periphery act as a kind of political buffer between the core and periphery, because poor state can aspire to join semi-periphery instead of aspiring to rebel against domination by the core. Semi-periphery regions which export manufactured products are just those China and South Asia, so that have been growing very rapidly in recent years. ये बेसिकली फर्स्ट जो हमारा गोल था, सॉरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था गोल 7 का, थ्योरीज ऑफ एक्यूमुलेशन, किस तरीके से वेस्ट जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करना थ्रू कैपिटलिस्ट सिस्टम। ऑब्जेक्टिव 2 है इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म वर्ल्ड सिविलाइजेशन, बेसिकली इंपीरियलिज्म है कॉलोनाइजेशन, किस तरीके से कॉलोनीज बनाई गई, वहां पे लोगों को बसाया गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो डिफरेंट सिविलाइजेशन है वो अब वो सिविलाइजेशन नहीं है वो जो कि ओरिजिनल थी, वहां पे डिफरेंट लोग इमिग्रेंट्स आके बस चुके हैं, तो वो अब चेंज हो गई है। तो देन आगे वर्ल्ड सिविलाइजेशन की ये बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, चाइना, जापान, अफ्रीका, अरब
यूरोप, ये तमाम क्या है वर्ल्ड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म क्या है, किस तरीके से यानी कि जो एक इंपीरियलिस्ट अप्रोच है अडॉप्ट की गई, ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म है। देन इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या थे, देन पोस्ट कॉलोनियल डिपेंडेंसी, जो कॉलोनीज के बाद जो जो स्टेट्स थी वो किस तरीके से डिपेंड हुई सुपर पावर्स पे। देन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलेगा, इस तरीके से प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया। इसको थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आएगी, क्योंकि हम ये वही चीजें हैं जो कि हम नॉर्मली रूटीन में पढ़ते आए हैं। Imperialism here, both the disparities in wealth between the global north and south and the region export specialization have long history. We review how imperialism affected the south over the centuries and how it after effects are still felt around the world. Imperialism, especially in the 16th to mid 20th century, structured world order starkly around the dominance principle, with master and slave, conqueror and conquered people, with their land, labor, and trade. At the same time, imperialism depends on the identity principle to unity the global north around a common racial identity that defines non-white people as an outgroup. किस तरीके से जो नॉन वाइट को आपने साइड लाइन कर दिया, एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड अडॉप्ट किया और जिसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक नजर आते हैं, रेसिस्ट अप्रोच नजर आता है। यानी ये वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, एक जो मैंने अभी बताया इमिग्रेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। नॉर्थ अमेरिका इंडिजीनियस कल्चर लार्जली एक्सटरमिनेटेड, खत्म हो गया, पुश्ड असाइड बाय यूरोपियन सेटलर, वहां पे यूरोपियन जाके सेटल्ड हो गए। So today's North American population is overwhelmingly descended from immigrants, and that's how it goes on. European civilization evolved from roots in the Eastern Mediterranean, Egypt, Mesopotamia, Iraq, जो कहते हैं, and especially Greece. So special importance for IR the classical period of Greek city-states around 400 BC, which exemplified some of the fundamental principles of interstate power politics. इसी के चाइना है, चाइना के किस तरीके से चेंज हुआ, जापान का, अफ्रीका का, अरब का, यूरोप का। मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म। European imperialism got its start in the 15th century with the development of ocean-going sailing ships in which a small crew could transport a sizable cargo over a long distance. Portugal pioneered the first voyages of exploration beyond Europe. Spain, France, and Britain soon followed. With superior military technology, Europeans gained control of coastal cities and of resupply outposts along major trade routes. Gradually, this control extended farther inland, first in Latin America, then in North America, and later throughout Asia and Africa. In 16th century, Spain and Portugal had extensive empires in Central America and Brazil, respectively. Britain and France had colonies in North America. किस तरीके से basically ये colonies बनाते गए। Then these empires decimated indigenous population, वहाँ पे लाके बसाया गया, and culture causing immense suffering. Over time, जिस तरीके से देखें, हमने देखा पार्टीशन के बाद कराची में जो कराची को सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया, कराची में मोस्टली उर्दू स्पीकिंग लोग थे, तो वहाँ पे मुहाजिरों को लाके आबाद किया गया, ठीक है। देन वो कराची का कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, वो एक किस्म की वो चेंज होना शुरू हो गया। इसी तरीके से वर्ल्ड पावर जो है वो काम, उसने काम किया जना, वहाँ पे जाके एक किस्म के से कि जीनोसाइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे लोगों को आबाद किया गया और उसका इसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। So over time, the economies of colonies developed with the creation of basic transportation and communication infrastructure, factories, and so on. But these economies were often molded to the needs of the colonizers, not the local population. कि किस तरीके से जो colonizers के उसमें जो कॉलोनी में उनके हिसाब से बेसिकली मोल्ड होना चाहिए। So decolonization began with the British colony in the US, who declared independence in 1730. यहाँ से जो कॉलोनियां थी वो आजाद होना चाहिए। American War of Independence. Most of the Latin American gained independence a few decades later. The new states in North America and Latin America were of course still run by the descendants of Europeans to the advantage of Native American and African states. New colonies were still being acquired by Europe through the end of the 19th. Then वो इस तरीके से करते रहते हैं। इंडियन कॉलोनी थी उनकी, तो 18 के वॉर ऑफ
कॉलोनी बना ली थी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1947 में जिसका खात्मा हुआ. India became Britain's largest and most independent colony in the 19th century. Latecomers such as Germany and Italy were frustrated to find few attractive territories remaining in the world when they tried to build overseas empire in the late 19th. Ultimately, only a few non-European areas of the world retained their independence. Japan, most often China, Iran, Turkey, and few other areas. Japan began building its own empire, as did the US at the end of 19th century. China became weaker and its coastal region fell under the domination, if not the formal control of European powers. Europe colonized most of the world territory at one time. किस तरीके से डिफरेंट जो सुपर पावर थे इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, तो इफेक्ट्स क्या हुआ उसका कॉलोनाइजेशन का, ठीक है. For most states in the global south, the history of having been colonized by European is central to their national identity, foreign policy. तो उनकी तमाम जो domestic foreign policy है identity पे वो foreign invasion की झलक आती है. For these states and especially for those within them who favor socialist perspective, international relations revolve around their asymmetrical power relation with industrialized states. आगे जब being colonized have a devastating effect on the people and culture. Foreigners overrun a territory with force and take it over. They install their own government, own culture, staffed by their own nationals. The inhabitants are forced to speak the language of the colonizer or adopt their culture. उनके स्कूलों में जाना चाहिए, basically उनका culture पढ़ना चाहिए. The inhabitants are told that they are racially inferior to the foreigner. White Europeans in third world colonies in Africa and Asia were greatly outnumbered by native inhabitants, but maintained power by a combination of force and psychological conditioning. It's narrative building. After generation under colonialism, most native inhabitants either saw white domination as normal or believed that nothing could be done about it. The whites often lived in a bubble world separated from the lives of the Europeans. उनका जो तरीका था रहन सहन था वो टोटली डिफरेंट था लोकल से. लोकल्स को वो छूट समझते थे. तो एक जो गैप था वो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे जो फोर्सेज हैं आर्मी है उन्हीं की बनाई हुई है. बेसिकली वही सिस्टम फॉलो किया जाता है ब्रिटिशर्स का. उसमें भी एक वही सिस्टम है जो एक ऑफिसर्स हैं उनका रहन सहन अलग है, जो कि जवान है सोल्जर्स है उनका रहन सहन अलग है. बहुत से इफेक्ट्स हुए colonialism के. So the economic effects were not all negative. Colonialism often fostered local economic accumulation. Cities grew, mines were dug, and farms established. It was in the colonial administration interest to foster local cycles of capital accumulation. Much of the infrastructure that exists today in many of the third world countries were created by colonization. In some cases, colonization combined disparate communities into a cohesive political unit with a common religion, language, culture, thus creating more opportunities for economic accumulation. In some cases, the local political culture replaced by colonialism were themselves oppressive to the majority of the people. Then post-colonial dependency है जो कि फेस की गई poorer countries ने उन पे डिपेंड रहे. ये इस पे है बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी है बेसिकली कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि डेवलप्ड नेशन पे डिपेंड उस पे बेस करती है. और देन लास्ट है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज में स्टार्ट हुई. क्यों हुई? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो एक लैक ऑफ फैसिलिटीज जो थी, infrastructure जो नहीं था, poverty and lack of access to basic human needs are prime causes of revolution, especially when poor people see others living much better. Have or have not been different. Inflation rate बढ़ता जाए. Most influential revolutionary movement in espouse egalitarian ideas, more equal distribution of wealth and power. During the Cold War years, the classic revolutionary movement was a communist insurgency based in the countryside. Usually, US imperialism or another such in foreign presence was viewed as a friend of the state and an enemy of the revolution. Sometimes the US government gave direct military aid to government facing such revolutionary movement. तो इसलिए क्या था कि जो US था वो उसको क्या करता था, जो
ये बेसिकली फायदा उठाते थे जो सुपर पावर। लेकिन वो बता रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट थे वो एड दिया करते थे फेसिंग सच रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उन गवर्नमेंट को। In a number of countries, U.S. military advisors and even combat troops were sent to help put down the revolution and keep communities from taking power. For its part, the Soviet Union often armed and helped train the revolution. एक तरफ वो उनको जो सोवियत थे वो उनको revolutionaries को सोशलिस्ट माइंडसेट को सामने लाते थे, जो उसी तरीके से जो यूएस है वो उनको सप्रेस करते थे, कैपिटलिस्ट माइंडसेट को प्रमोट करते थे। Thus, the domestic politics of poor countries became intertwined with great power politics in the context of North-South gap. In reality, many of these government and revolution had little to do with global communism, capitalism. They were local power struggles, sometimes between the haves and have-nots, sometimes between rival ethnic groups, into which great powers were drawn. इनको बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनको इस चीज से लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उनको अपने बेसिकली मफाद की जंग कह लें या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। जो ग्रेट पावर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, तो उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए बेसिकली काम कर रहे थे। सो कंक्लूजन ये है, जो नॉर्थ साउथ गैप है, how difficult it has become to separate political economy from national security. The original political relation contained in European imperialism led to economic condition in the South, such as high population growth, urbanization, concentration of wealth, that in turn led to the political movement for independence and later जो हालात क्रिएट कर दिए गए हैं वो कॉलोनाइजेशन के बाद देन उनके डिपेंडेंसी उन पे जो कॉलोनाइजर्स पे, और देन फिर जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुई। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नॉर्थ साउथ गैप कंसीडर्ड इन दिस चैप्टर इंक्लूडिंग हंगर, रेफ्यूजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सपोर्ट ऑल कंटेन बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेटेरियल। Marxists emphasize that the economic realities of accumulation are the lack of accumulation lie beneath all the political struggle related to global north। बेसिकली जो गैप है जो इन्होंने यहाँ बात की कि हंगर के, रेफ्यूजी के, कमोडिटी के, ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड के जो कि साउथ के प्रॉब्लम, और ये बेसिकली गैप है जो कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान है। तो मार्क्सिस्ट एम्फसाइज दैट द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन, द थ्योरी ऑफ एक्यूमुलेशन में हमने जिक्र किया, और लैक ऑफ एक्यूमुलेशन लाई बीनेथ ऑल द पॉलिटिकल स्ट्रगल दैट लेड टू द ग्लोबल नॉर्थ साउथ। और इसका एक फायदा यही है कि नॉर्थ साउथ को आपस में मिलके एक दूसरे को नॉर्थ को सपोर्ट करना चाहिए साउथ को, और एक पीसफुल और क्रिएटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दैट्स हाउ टुडेज लेक्चर इज। जो गैप है नॉर्थ साउथ का गैप है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने थ्योरी ऑफ एक्यूमुलेशन पढ़ा, किस तरीके से नॉर्थ के पास वेल्थ एक्यूमुलेट हुई, देन हमने जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था इंपीरियलिज्म पे पढ़ा, इंपीरियलिज्म की वजह से जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन की शक्ल चेंज हुई, और फिर उसके बाद जो कॉलोनियल जो हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म में जिस तरीके से जो सुपर पावर थे उन्होंने कॉलोनीज बनाया, और कॉलोनाइजर से जो कि एक वो कह लें कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, देन पोस्ट कॉलोनियल डिपेंडेंसी जो थी उसका हमने जिक्र किया कि वो जो कॉलोनाइज थे वो कॉलोनाइजर्स पे डिपेंड रहे, और इसके नतीजे में उनमें एक जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। साथ का सिलेबस वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। किसी में कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह आपसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी।